Welcome children, students of class 10 ICSC. Here I am here with your poem Abu Ben Adam. Now begin with the poem Abu Ben Adam. This poem is by James Henry Lee Hunt. He is the writer of this poem. This is a parable. A parable क्या होता है? What is a parable? Parable एक story telling होती है जिसमें कि एक moral lesson दिया जाता है. Now it tells us a moral lesson and taken from Arabic folklore. कहानियों से अरेबिक कहानियों से ये लिया गया है. Abu Ben Adam is the name of an Islamic saint who spent all his life in the service of mankind and left all worldly comforts for the sake of mankind. The poem is divided into two parts. It tells an incident when Abu Ben Adam encounters with an angel who is a messenger of God and how he became one of those who truly love God. तो इसमें एक मैसेज दिया गया है कि एबू बेन एडम जो कि एक सेंट है और वो किसके साथ उन्होंने एक एंजल को देखा अपने रूम में. उन्होंने एक रात एक एंजल को देखा और वो कॉन्वर्जेशन उनका एंजल के साथ होता है. सो द पोएम बिगिंस विद द कॉन्वर्जेशन ऑफ एबू बेन एडम विद द एंजल हु इज़ द मैसेंजर ऑफ द गॉड. द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम बिगिंस विद द नेम ऑफ एबू बेन एडम और उसके बाद आप देखेंगे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है मे हिज ट्राइब इंक्रीज. Why this is written in the bracket? Because this is not the part of a poem. This is because the poet he admires Abu Ben Adam who is a saint. उनको बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए उन्होंने ये बात ब्रैकेट में लिखी है. Awoke one night, Abu Ben Adam awoke from a deep dream of peace. Now a deep dream of peace may be his silent sleep as they sleep in a peace because there is nothing to lose, or it is a meditation which saints generally do to attain divinity. He woke up in the moonlight which was falling in his room. He saw an angel writing something in a golden book, a book of divine. Why it is written golden? Because it is a book of divine, God ki book. It's a book of divinity. Angel was blooming like a lily, making it rich and like a lily in bloom. Means that angel, he was blooming like a lily. Lily is a flower. When the shining moonlight falls upon him. An angel writing in a book of gold. So the book is written as golden because it is precious and divine. तो उस रात क्या होता है जब एबू बेन एडम अपने रूम में बहुत ही पीसफुल नींद से उठते हैं तो वो क्या देखते हैं कि सामने एक एंजल है, उनके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही है जिससे वो और डिवाइन लग रहे हैं. और वो किस तरह लग रहे हैं? ही इज़ ब्लूमिंग लाइक अ लिली फ्लावर. एन एंजल राइटिंग इन अ बुक. और वो एक किताब में कुछ लिख रहे हैं. वो किताब किस कलर की है? गोल्डन कलर की है. विच जो फिर से दिखा रहा है कि ये ईश्वर की किताब है, एक देवीय किताब है. सेकेंड स्टेंजा. Exceeding peace had made Ben Adam bold, and to the presence in the room he said. So Abu Ben Adam recognizes the angel because of his divine appearance. क्यों पहचान जाते हैं? क्योंकि वो खुद भी एक सेंट है और वो उसको पहचान जाते हैं कि वो एक एंजल है. He was a saint, thus he was able to visualize the divinity of the angel, had a calm and humble behavior. उस एंजल का बिहेवियर कैसा है? पीसफुल, बहुत ही काम, सूदिंग. उस एंजल के प्रेजेंस में एबू बेन एडम खुद को बहुत ही पीसफुल एंड काम फील करते हैं. एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड. तो उनको देखने के बाद ही फेल्ट सो कंफर्टेबल दैट ही बिकम बोल्ड. ही वॉज एबल टू क्वेश्चन हिम. वो डरते नहीं हैं और उनकी अपीयरेंस में वो उससे ये सवाल पूछते हैं. क्या सवाल पूछते हैं एबू बेन एडम? वॉट राइटेस्ट दाउ? मीन्स वॉट आर यू राइटिंग? आप क्या लिख रहे हो? द विजन रेज्ड हिज हेड. विजन, हु इज द विजन? द एंजल. विजन यहाँ पे एंजल के लिखा गया. द विजन रेज्ड हिज हेड. वो अपना सर उठाता है. एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड आंसर्ड द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड. with a smooth, sweet, charming voice. So Abu Ben Adam asked the angel, "What are you writing?" He raised his head
and answers in a sweet, charming voice. He answered, I am writing the names of those who love God. मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो ईश्वर को प्यार करते हैं. In the third stanza, and is mine one. जब एबू वैन एडम ये सुनते हैं कि वो उनका नाम लिख रहे हैं कि जो ईश्वर को प्यार करते हैं, तो एबू वैन एडम को इतना विश्वास था कि मैं भी ईश्वर का भक्त हूँ और सेंट हूँ इतना बड़ा, तो मेरा नाम ज़रूर ही उस बुक में, गोल्डन बुक में होगा. तो ये सोच के वो पूछते हैं बहुत ही क्यूरोसिटी से, आउट ऑफ क्यूरोसिटी ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, एंड इज माइन वन, कि मेरा नाम भी वहाँ है. ने नॉट सो, ये किसका आंसर है? ये एंजल आंसर देता है, नहीं, आपका नाम यहाँ पर नहीं है. रिप्लाइड द एंजल, एबू स्पोक मोर लो. और जैसे ही एबू सुनते हैं कि उनका नाम वहाँ पर नहीं है, ही साउंड्स लो. लो मतलब उनका दिल टूट जाता है. So Abu asked the angel, out of curiosity, he asked the angel that his name is there in the list. Angel answers, no. Angel's answer made him sad, but he requested the angel to write his name among those who love fellow men, means who love mankind. These lines made the poem immortal, that Abu Ben Adam is not sure his love for God, but he is sure that he loves mankind, and this quality made him divine. Now come to the next stanza, stanza 4. The angel wrote and vanished. The next night it came again with a great wakening light and showed the names whom love of God had blessed. And lo, exclamatory mark, Ben Adam's name led all the rest. So Abu Adam was little disappointed because his name was not there in the list. But still he requested the angel to prepare a list who love their fellow men. जब एबू बेन एडम पूछता है एंजल से कि उस नाम जो लिस्ट है उसमें उसका नाम भी है, पर जब उसको उसका नाम नहीं दिखता है तो वो डिसअपॉइंटेड होता है, वॉज लिटिल सैड. बट फिर भी उसको विश्वास था और वो पूछता है, कहता है, रिक्वेस्ट करता है एंजल से कि एक नया लिस्ट बना कर दो जिसमें कि उन लोगों के नाम हो जो मैनकाइंड को, जो ह्यूमैनिटी को लव करते हों. सो नेक्स्ट मॉर्निंग द एंजल केम विद अ मोर डैज़लिंग लाइट and he showed Abu the list of the person blessed by God. In that list, और उस लिस्ट में जब दूसरी रात वो एंजल आता है और उस दिन जो लाइट पड़ रही होती है, दैट इज़ मोर डैज़लिंग, ज़्यादा उसमें शाइन था. सो एबू को वो जो लिस्ट दिखाता है, दैट लिस्ट ऑफ द पर्सन ब्लेस्ड बाय गॉड, इन दैट लिस्ट एबूज नेम वॉज फर्स्ट इन द लिस्ट. दिस शोज दैट टू लव द मैनकाइंड इज बेस्ट. तो बच्चों अब हम आते हैं इसके सेंट्रल आइडिया पर पोएम के. जब भी आप किसी भी पोएम को पढ़ते हैं तो उसके थीम को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि थीम एक वो चीज़ होती है जो कि पोएम का सार होता है. इट इज़ अ जिस्ट ऑफ द पोएम. By reading the theme, you are able to understand what this poem is about. तो आप कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर आप थीम को बेस्ड मानकर उस पोएम के क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो आपके आंसर्स हमेशा करेक्ट. द फर्स्ट थीम ऑफ दिस पोएम इज लव फॉर मैनकाइंड. As you know that Abu Ben Adam, he is a saint and he is a divine person. So in his dream, the angel has come, and when he asked the question that what he is doing, what the angel was doing, he was writing something on the golden book. And what he was writing the names of the person who loved God. But Abu Ben Adam's name was not there. When he asked him to write down the names of those person who love mankind, his name was on the first in the list. So you have seen that the love for mankind is the main theme of the poem, that it is better to serve the mankind. The second theme is representation of faith. यहाँ पे faith को दर्शाया गया है, because Abu Ben Adam had a faith on God, so he had a faith on himself, that he is a person, maybe he is not a person who is loved by God, but he love his fellow men. वो अपने लोगों को प्यार करता है, मैनकाइंड को प्यार करता है, ह्यूमैनिटी को प्यार करता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है. So he has a faith that he must be loved by God. तो एक firm belief है उसके अंदर. Now see the rhyming scheme. The rhyming scheme of the poem is A, B, A, B. Means the first line rhymes with the third line and second line rhymes with the fourth line.
It is written in iambic pentameter. What is iambic pentameter? It is a type of meter having 5 iambs. And saw within the moonlight in his. See this line. Here you are seeing that there are 5 breaks in this line. Now next is poem is in couplets. Couplets are 2 stanza that rhymes. 2 stanza जैसे कि हिंदी में दोहा होता है उसे कपलेट कहते हैं जो राइम करते हैं. So it is a couplet. Now come to the figure of a speech which is used in this poem. The first figure of a speech is alliteration. What is alliteration? I have told you in my earlier poems also that it is a repetition of initial consonant sound words. Now see the line first, which is an example of alliteration. Abu Ben Adam. Here you are seeing that A is repeated 2 times. The second line, deep dream of peace. Here you are seeing that D is repeated 2 times. Now see the line 11. Nay, not so. Here N is a consonant and that is used 2 times. The next example is line 13. Pray thou then. Pray thee then. Here T is used 2 times in the line. The next figure of a speech is assonance. That is the repetition of same vowel sounds making it rich. Same vowel sounds. इसमें हम vowels को repeat करते हैं. जैसे कि line 4 में देखिए making it rich. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि I vowel sound is repeated. Now see the line 12. Abu spoke more low. Here you are seeing O. More spoke more low. The sound of O is repeating 3 times, thrice. There is a simile. Simile is a direct comparison between 2 things by using as or like. What is the line? The line is like a lily in bloom. So the lily is a comparison for bloom. The next figure of a speech is imagery. Here the poet has used imagery. What is it? This makes the readers to imagine the poem within their 5 senses. जब भी हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं और हम इमेजिन किससे कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस के द्वारा जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ इमेजरी. द लाइन इज एन एंजल राइटिंग अ बुक. व्हेन द पोएट हैज़ रिटन दिस लाइन, so immediately a picture has came in your mind that there is an angel who is sitting in the room of the Abu and he is writing something on the book. The book was golden. The next line, it came again with a great awakening light. This line, the image comes that on the next day he came with a dazzling awakening light, that the light falls upon him and it makes him divine. So immediately the image, the impact of that scene comes into your mind. Next is symbolism. That is the ideas by giving them symbolic meanings. Now here, angel and light, symbol of spirituality. These 2 names, angel, अगर हम किसी भी चीज़ में angel की बात करते हैं, angel क्या होता है? दूत, ईश्वर का दूत. तो वो किसका symbol है? That is a symbol of spirituality. That is a symbol of God, divine. Similarly, lighted, dazzling. These are the words which symbolizes God-like, which symbolizes humanity and spirituality. Now the poet has used one more figure of a speech, that is archaism. What is it? The poet used archaic words. Archaic words are the old English words to give this poem an impact of olden days. Now see the line, what writest thou? Thou जो आजकल की इंग्लिश में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, it is in old English. The second line, I pray thee then. Thee is used for you. I pray you. आपने शेक्सपियरियन इंग्लिश में पढ़े होंगे ये वर्ड्स जो कि ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं. Now it has been changed to you. So why the poet has used these words? These words are used to give this poem and poem of olden times. So bring an old world feel in this poem. The poet has used this. Next is hyperbole. Hyperbole is exaggeration. When we say something by enhancing its meaning, by exaggerating its meaning. That is, the book that angel is writing is golden and shining. So here the book is described as made of gold and shiny. It was shining so brightly like a gold. So this is an exaggeration of thought.
Now it is a time of questions. So I am here adding the questions and just try to answer the questions. So this is the explanation of the whole poem along with all the literary devices and figure of speech. So children, do like, share and subscribe my YouTube channel. And don't forget to press the notification bell so that you don't miss any of my educational videos. You can ask me the questions in the comment section regarding this poem. I will surely solve your doubts.